In our previous lecture, we have studied regarding asexual reproduction in organisms and अब इस lecture में हम पढ़ेंगे regarding apomixis and vegetative reproduction. Now, apomixis and vegetative propagation are the types of asexual reproduction in plants. Now, apomixis detailed study you are going to have in your next chapter. Okay, so here we will look through, or we can revise the topic of vegetative propagation, which you have already studied in your 11th standard. Vegetative propagation is classified into natural methods and artificial methods. In natural methods, we are having modified stem, modified root and modified leaf, which give rise to a new plant asexually. And in artificial methods, we are having cutting, layering, grafting and micropropagation. Now, first modified stem is the runner. As you can see in the diagram, runners, they are the slender horizontal branch. और जब ये रनर सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, at that time they develop a new shoot and a root system. Example is the root grass. The next modified stem we are having is the offset. अब ये offset जो है, it is a modified stem which is shorter and thicker और ये aquatic plants में पाए जाते हैं. As you can see in the diagram, baby plant, it is still attached to the mother plant and you can see a very good indication of an offset in the middle. Example, it is found in Pistia and Acornia. The next example we are having is a tuber. We know that potato is an example of a tuber, and on the surface of potato, eyes are present, and these eyes, they develop into bud, and bud give rise to a new plant. The next example we are having is the rhizome. अब ये rhizome क्या है? Again, it is a underground modification of stem, and in the diagram you can see node position जो बताई गई है, उस position पे new plant develop होता है. Example, it is found in ginger and turmeric. The next we are having is a bulb. It is again an underground stem reduced in size. जैसे diagram में आप देख सकते हैं, there are leaves which are swollen and stores food, and a lateral or a daughter bud develops at the end of the season. Example is onion and garlic. The next it is corm. अब ये corm जो होते हैं, they are swollen solid structures हैं जो underground पाए जाते हैं, but they are enclosed या वो cover up होते हैं by dry papery leaves. Example we are having in Gladiolus crocus and autumn crocus. Now suckers are the subaerial modification of stem. ये जो है, they are the lateral branches which develop from the underground part of the stem. They arise from below the surface of the soil. Example is chrysanthemum. Now say stolons जो होते हैं, they are the slender stem जो कि roof like pattern में grow होते हैं along the ground from the base of the mother plant, and they produce a new plant when they come in contact with the soil, or they develop a new plant from the bud at its tip or the nodes. Example is the strawberry. आगे जो स्लाइड्स में हमने एग्जाम्पल देखे, दे ऑल आर द मॉडिफाइड स्टेम विच गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट asexually. Okay, now here we are having example of modified root, that is sweet potato. In the diagram you can very clearly see a new plant develops from the mother plant. They are having adventitious buds. ठीक है, तो adventitious buds जो होते हैं वो young plant को arise करते हैं, and the baby plant, it is clearly seen in the second figure. Okay, the last figure is we are having the example of dahlia. In that also mother plant is having still a new outgrowth of the baby plant. Now in case of the modified leaf, we are having example of bryophyllum. You can very clearly see that the margins of the leaf, they are having developing buds, and these buds give rise to a new plant, as you can see in the figure 2. Now among the artificial methods we have cutting. अब cutting में plant body, typically a stem, a leaf or a underground root, वो mother plant से cut किया जाता है, and the cutting is then put again into a new place.
Now from that cutting adventitious root develop and a new plant is formed. कभी कभार इस कटिंग को आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया जाता है जिसकी वजह से रैपिड न्यू प्लांट डेवलपमेंट हो सके. Now again in case of layering we have two methods. One is mound layering and another is air layering. अब mound layering में क्या होगा कि प्लांट की ब्रांच को बेंड किया जाता है एंड इट इज़ कॉन्टैक्टेड विद द सॉइल. सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाने के बाद उसे मड या सॉइल से कवर कर दिया जाता है एंड इन दैट कवरिंग एडवेंटिशियस रूट डेवलप्स. From that adventitious root a new plant develops and then it is separated from the mother plant. In the second type of air layering bark में से या plant की branch में से bark tissue को remove कर देते हैं as you can see in the diagram and then वो जो cutting है उससे moist soil से cover कर दिया जाता है. The entire process or the entire covering by the soil उसे अब रिकवर करते हैं पॉलीथीन बैग से जिसकी वजह से जो सॉइल में मॉइस्चर है वो रिटेन रहे. आफ्टर सम डेज न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम दैट पॉलीथीन इनसाइड दैट पॉलीथीन कवरिंग. ओके, और रूट्स डेवलप हो जाने के बाद देन द एंटायर सिस्टम इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर बॉडी एंड इट इज buried down into a new soil. Now in grafting, the desired cutting or scion is attached to the stem of another plant that remains rooted in the ground. अब इसका मतलब ये है कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस में सियॉन जो स्टेम कटिंग है वन प्लांट का उसे माउंट किया जाता है स्टॉक पे जो स्टेम है दूसरे प्लांट का विच इज़ ऑलरेडी रूटेड इन द ग्राउंड. ये करने की वजह से क्या होगा, टिश्यू सिस्टम ऑफ सियॉन वो मैच करेगा या इंटीग्रेट हो जाएगा टिश्यू सिस्टम ऑफ स्टॉक में और जो न्यू प्लांट हमें मिलेगा दैट विल बी हैविंग अ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द पेरेंट प्लांट्स. Now in tissue culture technique, the culturing of a plant cell is done where plant parts they are developed or cultured into a petri dish containing nutritive medium. मतलब कि सेल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है, इन अ वेरी स्टेरिलाइज्ड कंटेनर एंड न्यूट्रिशन भी वो पेट्री डिश में प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से अ नंबर ऑफ सेल्स डेवलप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट जिसको कहते हैं कैलस. द कैलस इज देन कल्चर्ड इन अ हार्मोन लीडन मीडियम. ठीक है, अब इस कैलस को हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करवाया जाता है एंड इवेंचुअली दैट कैलस डेवलप्स इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट्स. नाउ ये प्लांटलेट्स जब डेवलप हो जाते हैं तब उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है सॉइल में इन विच दे डेवलप इनटू अ फुल्ली मैच्योर्ड प्लांट.